नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। भाई फटाफट से जुड़ जाओ, थोड़ी देर बाद आपकी 2 बजे हियरिंग स्टार्ट होगी और इतना हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों के डाउट है, ठीक है, वो भी आप लोग पूछ सकते हो। और काफ़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग है भाई। अगर मैं बात करूँ, आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जितने भी, उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग है भाई आज की। तो आशा तो ये रहेगी कि भाई जो सरकार है, एनसीटी है, कुछ अच्छे सबूत, कुछ अच्छे चीज़ें पेश करे बीएड को लेके, है ना। और 2 बजे हियरिंग स्टार्ट होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। सभी जुड़े हुए हैं भाई, डीएलएड वाले नेता भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप लोग देखो, स्क्रीन पे नाम देख सकते हो। इधर से राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर देख रहे हो। लेकिन यार पता क्या है, एक चीज़ अगर मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, डिफरेंस है। हाँ, तुषार मेहता जी आएंगे बिल्कुल। डिफरेंस है बहुत बड़ा। किसमें? बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके, जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं बीएड के और जो आपके नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं बीएड के, बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं दोनों कैंडिडेट की बात करूं, दोनों की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। देखो, जो दिक्कतें पैदा हुई वो आपके 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को लेके हुई, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं पूरे देश के बीएड डिग्री होल्डर को उस 11 अगस्त के जजमेंट पे ध्यान देना चाहिए था। उस 11 अगस्त के जजमेंट को कैसे चैलेंज करना है, कैसे उसको बदलना है, उस पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन है क्या, सब बच्चे अलग अलग राज्य के अलग अलग तरह से चले गए। जैसे कि आपने कल छत्तीसगढ़ में देखा भाई, कितना गलत स्थिति उन लोगों के साथ हुई कल छत्तीसगढ़ में। और वहां पे तो समझ लो, मतलब ऐसा होगा अगर आप लोग ऐसे जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, और सिलेक्टेड कैंडिडेट की वजह से ही है ये। अगर मैं बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की बात कर लूं तो वो कहीं ना कहीं अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे बीएड की बात करते हैं। वो अपनी रिव्यू के थ्रू जो जा रहे हैं, वो उसमें पूरे बीएड की बात करते हैं, चाहे आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हो और चाहे आपका अनसेलेक्टेड भी हो। और उससे क्या लगता है, उससे ये शो होता है कि हाँ, पूरा बीएड एक साथ है। लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट अलग अलग जाते हैं, है ना, और ना ही वो अनसेलेक्टेड के। चलो कोई नहीं, आप जाओ। हम मानते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके पास पैसा ज्यादा है, वो आराम से इजीली एक अच्छा लॉयर कर लेगा, एक अच्छा सीनियर वकील कर लेगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो कम से कम आप सबको तो लेके जाओ, आप अपने साथ अनसेलेक्टेड को भी तो लेके जाओ, आप रिव्यू में जाओ ना सबके सब, ताकि आप तो बचो ही बचो, सब बच जाएं। लेकिन आप ऐसे अलग अलग जाओगे, है ना, बस मुझे बचा लो, मेरा हो जाए, बस भाड़ में जाए फिर सब, है ना। तो फिर तो ऐसा हाल हो गया जैसे कल छत्तीसगढ़ में हुआ। क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट बहुत कुछ कर सकता है अगर उसकी नीयत अच्छी हो, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं करना है बस। और इसी वजह से यही कारण है कि बीएड हारता है हर बार। आज देखते हैं भाई क्या काउंटर क्वेश्चन करती हैं आपकी झूठी मीनाक्षी अरोड़ा, जो कि हर बार झूठ बोलती हैं सुप्रीम कोर्ट में कि डीएलएड ओनली 1 to 5 एलिजिबल, है ना। जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो डीएलएड है वो 1 to 5 नहीं, वो 6 to 8 भी है, और बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ वो टीजीटी में भी शामिल है ना। तो वही सारी चीजें हैं। और बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर करिएगा, है ना। तब तो सर, यदि कोई स्टेट में अपॉइंटेड 11 अगस्त 2023 से पहले हुए और उस टाइम, क्या लिखा, और उस टाइम भी बीएड के अपॉइंटेड में नहीं लिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देगा? हाँ बिल्कुल, वही तो है। मान लो अगर आज हार जाते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मान लो आज बीएड हार गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि सरकार साथ है, एनसीटी साथ है, और वो किस तरह से पक्ष रखेंगे आज, वो सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली, है ना। लेकिन मान के चलते हैं, मान लो अगर आज बीएड हार जाता है, फिर भी इन अपॉइंटेड पे 11 अगस्त 2023 से पहले वाले अपॉइंटेड से लेके कोई भी अपॉइंटेड हो, उसके पास रिव्यू में मौका है। रिव्यू सबके लिए है, रिव्यू सबके लिए है। आज अगर हार भी जाता है ना बीएड, तब भी रिव्यू के थ्रू अगर जजमेंट चेंज हो जाता है ना, तब भी अंदर हो जाएगा, सारा का सारा बीएड अंदर हो जाएगा। रिव्यू तो एक इतनी रामबाण है, रिव्यू रामबाण इलाज है, जैसे बोलते हैं ना पेनेसिया। रिव्यू में अगर आप पॉजिटिव ले आते हो तो कोई सा भी बीएड कैंडिडेट हो, अपॉइंटेड हो,
सेलेक्टेड हो, अनसेलेक्टेड हो, ऑनगोइंग हो, आउटकम हो, कोई सा भी बीएड कैंडिडेट हो, वो सारे अंदर होंगे एक साथ। इसलिए कहीं ना कहीं रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिलेक्टेड कर सकता था ये चीज, लेकिन पता नहीं क्यों सिलेक्टेड वो अपनी अपनी है। कहीं ना कहीं उस 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को चोट देनी चाहिए, और वहां चोट दोगे ना तो सबको बचा लोगे, और सबको उस पे जाओगे ना तो पूरा बीएड एक साथ इकट्ठा होगा, एक ताकत लगेगी, एक मुट्ठी ताकत लगती है, ऐसा लगेगा कि हाँ पूरा बीएड एक साथ खड़ा है। सर तुषार मेहता होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होंगे भाई, बिल्कुल होंगे भाई। जिनका ये क्वेश्चन है ना सर तुषार मेहता होंगे, हाँ भाई होंगे, ठीक है ना। झूठी क्या मजाक करता है भाई। अच्छा तुम ही बताओ शैलेश, क्या जो बीटीसी है, जो डीएलएड है, क्या वो 1 to 5 एलिजिबल है? अच्छा ये जो मीनाक्षी अरोड़ा के तो है ना ये शब्द, मेरे थोड़ी ना है, ये मीनाक्षी अरोड़ा के शब्द हैं कि डीएलएड ओनली 1 to 5 एलिजिबल। तुम ही बताओ क्या तुम 1 to 5 एलिजिबल हो या 6 to 8 में भी हो? बताओ मुझे बताओ, क्या तुम 6 to 8 का फॉर्म नहीं भर सकते? रिव्यू के लिए फंडिंग कर दो, और बिल्कुल बिल्कुल भाई, रिव्यू के लिए भाई, रिव्यू बहुत जरूरी है, आप लोग को सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग को सहयोग करना चाहिए भाई, बिना रिव्यू के आप लोग, हम पहले ही कह रहे थे, मैंने आपको पहले ही समझाया था आप सभी को कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो अपॉइंटेड है वो बिल्कुल अलग है, उनका इस हियरिंग में जो आज होनी है उसमें हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट आउटकम वाले, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले थे, उसके बाद आपके केवीएस वाले ऑन गोइंग वाले थे, उसके बाद बिहार वाले आपके ऑन गोइंग वाले थे, उसके बाद अनसेलेक्टेड, इन सभी कैंडिडेट का जो समाधान होगा वो रिव्यू के थ्रू होगा, रिव्यू के थ्रू। इस चीज को समझो, क्योंकि और ये जो 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंटेड वाले कैंडिडेट हैं, इनका क्यों हो जाएगा समाधान? क्योंकि तुषार मेहता खड़े हैं इसलिए, वरना ये भी खतरे में थे, सही बताऊं तो, सही बताऊं तो ये भी बहुत तगड़े खतरे में थे। लेकिन इनका समाधान हो जाएगा क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इनके साथ आ गई, किस्मत कह लो अच्छी थी, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। हाँ, बाकी किसी कोई डाउट है? और डीएलएड की तरफ से कौन, डीएलएड की तरफ से भाई आपका वही, मतलब बीटीसी वालों की तरफ से आपका मीनाक्षी अरोड़ा और वही आपका कपिल सिब्बल आएंगे, है ना। इंशाल्लाह जीतेगा आज बीएड, और आज बीएड की जीत हो जाएगी इंशाल्लाह। रमजान का महीना है इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या ही होता है ना, वो तो 2 बजे पता चलेगा, आपका 2 बज गए हैं, थोड़ी देर में हियरिंग स्टार्ट हो ही जाएगी आप लोगों की। सर आज क्या देवेश शर्मा को भी रिलीफ मिलेगा क्या? अरे जो अपॉइंटेड है उसको रिलीफ मिलेगा, देवेश शर्मा अपॉइंटेड थोड़ी ना है, देवेश शर्मा के पास सैलरी थोड़ी ना आई है। रिलीफ किसको मिलेगा? आज रिलीफ उसको मिलेगा जो 11 अगस्त 2023 से पहले टीचर लग चुके हैं, सैलरी ले चुके हैं, उनको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। चीजों को आप समझा करो भाई, ऐसे नहीं चलता काम। और यही तो कारण है आप लोग चीजों को समझते नहीं हो, और यही सबसे बड़ा कारण है कि बीएड हारता है, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए आप सहयोग भी नहीं करते हो। बाकी आपने बिहार को सहयोग किया है ना, बाकी आपने अलग अलग केवीएस में सहयोग किया आपने, पता नहीं किसको, है ना। जो लोग आप लोगों के पैसे खा गए, अब उनके आपका एक्सपीरियंस क्या हो गया, थोड़ा गंदा हो गया। अब जो लोग आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से खड़े हैं और जो रिव्यू के थ्रू जजमेंट को बदल देंगे, उनकी ड्राफ्टिंग बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, हर एक पॉइंट अच्छे हैं, उनका आप लोग साथ नहीं देते हो, है ना। अब क्या ही कर सकते हैं भाई। सर आप बताओ यूपी 69,000 से, हाँ यूपी 69,000 भाई सेफ रहेगा, आज उनका इलाज हो जाएगा आज, टेंशन मत लो। लेकिन यार वही है भाई, वही है, आप लोगों को जितने भी सिलेक्टेड हैं अगर आज सेफ हो जाते हैं, ठीक है ना, देखो बहुत अच्छी बात है, जो सिलेक्टेड हैं वो सेफ हो जाए, मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि नौकरी की बात है। लेकिन अगर आज आप लोग सेफ हो जाते हो तो यार रिव्यू में जरूर साथ दे देना, ठीक है।
बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि जो आपके भाई हैं, देखो आप तो बच जाओगे, तुषार मेहता और सरकार एनसीटी आपको आज बचा लेगी, जितने भी सिलेक्टेड हैं 11 अगस्त 2023 से पहले पहले। लेकिन पीछे मुड़ के जो आपके भाई खड़े हैं, ऑन गोइंग वाले, आउटकम वाले, है ना, सिंपल बीएड वाला छात्र जिसने अभी तक किसी भी एग्जाम में भाग नहीं लिया था, उनका साथ जरूर दे देना, क्योंकि वो रिव्यू के थ्रू जाएंगे और जा रहे हैं। उनका सहयोग प्लीज जरूर कर देना, अगर आप आज सेफ हो जाते हो तो, है ना। तो क्योंकि आप लोग सिलेक्टेड हैं, आप लोग 1500 से भी सहयोग करेंगे ना, तो आपके लिए तो वो बहुत कम है, मतलब मिनिमम सहयोग है वो, तो आप तो कितना भी कर सकते हैं, है ना। MP 11,000 का भाई आज ही होगा, MP 11,000 का 2 बजे जो स्टार्ट होगी ना हेयरिंग, उसमें ही होगा। MP वालों का 69,000 वालों का आज ही है इनका सब कुछ, उत्तराखंड वालों का आज ही है, ठीक है भाई। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, सचिन का क्या क्वेश्चन है। हमारी अपॉइंटेड 17/2/2021 में हुआ है, हमारा क्या, हाँ तो तुम्हारा आज ही होगा भाई सचिन। बिल्कुल बिल्कुल। कब आओगे? लाइव अपने आप ही शुरू हो जाएगी, जैसे ही जज साहब आएंगे अपना आप लाइव स्टार्ट हो जाएगी। बिहार वाले, बिहार 6 फेज वाले वो हो जाएंगे सेफ। बिहार में जो अपॉइंटेड हटाए गए थे ना, वो सेफ हो जाएंगे, अगर आज मतलब ये अपॉइंटेड सेफ होते हैं तो, है ना। स्टार्ट होने वाला है शायद, कोर्ट रूम 5 लिखा आ गया है सामने, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी हियरिंग, ठीक है। जैसे हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं चुप हो जाऊंगा, ठीक है, और फिर आराम से हियरिंग सुनेंगे क्या कहते हैं आज क्या नहीं। छत्तीसगढ़ वाले नहीं हो पाएंगे भाई, छत्तीसगढ़ वालों की जो ज्वाइनिंग थी वो 11 अगस्त हो गए, स्टार्ट हो गए, चलो ठीक है ना, चलिए चलिए। There is a writ petition in which notice has already been issued, and in that writ petition we have prayed that the all the appointments prior to the judgment of your lordship should also be quashed. So lordship, that writ petition should, with great respects, may also be heard together, because lordships, our interests are substantially covered in that writ petition. So that writ petition should be tagged with MA, or that lordship may, We are, because that lordship has already seized of the matter. That is why in this case, see, notice, first of all, we can't take a writ petition directly. It has to be assigned to us. but It's lordships, not tagged already. lordships have already issued. My humble submission is, No. since Yes, lordships have Let seized us, of the matter. let us deal with it, then we think about that. In fact, I have filed an IA also in which that order of your lordships has been annexed. Small suggestion. The high courts of, because this is dealing with a national issue, the high courts of Patna, of Chhattisgarh, and of Uttarakhand were all seized with petitions similar to what this MA is asking for, to decide whether this judgment in Devesh Sharma was prospective or retrospective. All three have held concurrently that they are, as all judgments are, they are retrospective. My Lord Justice Dhulia last time remarked that if it was to be only prospective, the judgment would have said so. In the event, the So High I'm Court sorry, I just, have held, yes, then you will have to come up with an SLP, correct. So I'm sorry. In one of the states against Chhattisgarh, an SLP has been filed, I understand, and it's pending. Now, Bihar has been filed and it's pending. Maybe Uttarakhand also is what we understand. Madhya Pradesh, where this application arises out of, the petitions are pending before the High Court. The High Court has been told that the state has filed an MA here at the stage of arguments. They were already arguing the matter, and the High Court has frowned upon the state's conduct and said, look, why would you now at this belated stage come and tell us that we have filed an MA? What they did not tell you last time is they've also filed a transfer petition to transfer the Madhya Pradesh High Court petitions to this court. Now, since these issues are already at large or decided by the High Court in properly constituted 226 petitions or SLPs, our suggestion to your lordships is please don't entertain an MA
because as your lordships can see, if you compare the crowd today with the crowd that all day, this will it's, lose relevance. it's become much larger with all various states, No, no, parties this on is both all- sides, parties on both sides coming and taking objections. Right now, the only party before your lordships, It is the state's MA, my friend is a response. yes, and you're also not for the state. Yes, When we decided that question, exactly. The fact that somebody had already got into the job and others were, but that specifically, that issue was not. Not there, Yes, I It was, argued it. your My- interim order covered it. My friend cannot comment, I argued the 12th matter. October 22, the interim order covered it. Cannot go like this. Let it go to the High Court. Sir. Yes, that's ideal. The- That's what we say, High man. Court cannot decide it, my lord. High Court cannot. Your lordship has to do it. Yes. Yes. Yeah, of course, please, all of you, please add. In fact, Yes. the Supreme Court has decided Yes. this question. My lords, So may I also, we have a preliminary objection, my lord, to the very maintainability of these MAs. Lordships have held time and again that these kind of MAs, my lord, for clarification, etc., First the MAs after a reasoned judgment is passed, is totally not maintainable. By- You have to approach in review or something like that, my lord. By raising lords, it cannot work. The petitioner in the MA has to open his case. The My lords. petitioner has to open, then they You're will not the respond. petitioner. Now, the point here is that Now, if the petitioner opens the case, it won't be possible for this very bench to close it. no, my lord, the point is, the hearing cannot be sort of just. My lords, just one thing, The- may I no point High Court- out? Can I just conclude? Yes. They have not come. First of all, they have not On the been filed. last occasion. Now, my lords, I want to make a very important submission here. One of the queries that my lords made was, is there a bridge course? They have not filed an affidavit. We got in RTI a reply as of March 2024, there is no bridge course. We have Now, also filed an IA pointing out Yes, there is. Walia, 1 minute now, allow me to finish. My lords, what is the consequence of that? We appoint people who are not qualified. There is no bridge course existing. Even if assuming there's a bridge course at some date later, we have people who are not qualified to continue to work, number one. Number two, there is no certainty they will qualify the course. There is no certainty that they will go and qualify the course. We are opening This another is Pandora's just- box out here. These are just arguments of prejudice. There is no qualification of a bridge course. You have to undergo the course. That's all. There is no question of, it's not a qualifying examination. Mr. Patwala is for the MP government. He can either decide he wants to argue or withdraw. Yes. No, he's the MP government. That's why he wants to start. I'll just move back and make room for you. It's okay. These are before us. My lord, we have filed IAs on behalf of the candidates of Bengal and Bihar as well. Why- Lordships, Uttar Pradesh is also here, Lordship. Why Uttar are we Pradesh is party also. to the Rajasthan. That was The Rajasthan. judgment, Rajasthan. the judgment we States. decided, Yes. Rajasthan. Rajasthan. you are Rajasthan. not a party to that. Nobody was. Lordships, Yeah. Bihar was there. Bihar was there. Lordships, we are a group of, My lord, your lordship had asked, How will we listen? my lord, your lordship had asked for. my lords, there All was the a states- publication that was directed. There was everyone was on notice. There is an order of 12th Yeah, October that was 2022 the case of by which Rajasthan, which has everyone was put on decided by the notice. Honorable My lord, Court. as per, All these states were. For them to say they were not there, that will be a completely wrong statement to make. Some states The- appointments took place even prior to the High Court order, especially UP, Lord- even prior to the. Who can give us a chart? my lord, we can do it. Lordships- My lord, just one line. No High Court can decide this issue. Once your lordship's judgment is there, no High Court can say it will not operate retrospectively. Courts have decided. It is only your lordships who can clarify, and therefore this application has to be decided by your lordships. High courts have decided. High courts have no option. decided. How can the High Court say? High Court has no option. High Court. High courts have followed a law. Yes, that's right. That's right. High Court has no option. High Court will follow. It's only your lordship's bench which can take a view whether the earlier appointments are to be protected or not.
It's only for your lordships. Para 10 Once of your lordship- lordship's judgment says, if I may read that out, Like this, Malord. during the course of hearing, Very the sorry. court had passed an order dated 24th August 22, granting liberty to the Board of Secondary Education for different states How this is going. and other stakeholders to be impleaded as interveners. Pursuant to this order, several interlocutory applications were filed which are being heard along with these appeals. Now, the MP had come, several states had come. Your lordships decided to take the facts and the pleadings of Rajasthan because Rajasthan was the first High Court judgment which had come, against which a SLP was. But this applied across the board. Your lordships have already rejected applications which have been filed for other states, Single application. even has been even rejected. It's a wrong in statement. a three-judge combination. 11th of January, Lordship. Just go matter through I know. because he'll bully you. Yeah. No, I will. 22. 21. 21. We take that the taking date. With the Rajasthan High Court judge. Yes. 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 My lord, There Chhattisgarh are- High Court in his The judgment case is which has been actually decided, held that's it my point. so. Kindly bear Chhattisgarh with High me. Court's judgment actually holds it from Rajasthan High Court. My lord, the other thing But- that I really but wish to Shimla has- submit is, Last order which. Yes, Yeah. therefore, My lord, kindly see, while Kindly we see pass the this last- kindly see order, the last order. 13/3/24. May I hand over the last order, Lordships? 13/3/20. Yeah, that's what we are, yeah, correct. Can you give us a state-wise chart? Yes, that's Yes, what. Your Now, Lordship. one second. Now, please. Now we have written a letter to all the states indicating whether there is a. Time for writing letter and Yeah. getting it. So No, we have to Lordship get- has already been. Tomorrow, can you give us by tomorrow? By tomorrow, it will be extremely difficult. We have to, states have to reply because it's a huge exercise they have to undertake and we have to comply it. Simple exercise that. No, but we have. Help it take Well, very simple exercise. That's the simplest. The best is. No, Mr. Shankar, no, it's my turn. I did not interrupt. Please wait. Please wait. Now we have written letter. We have been getting some information. I think within a week we will be able to get information about the vacancy position in each state and also whether the bridge course could be done or not. All those informations have been sought. I think Lordship- we'll be able to compile it. Number two. Lordship, Number one, the lost mat- arguments, one we have second, a madam. judgment finally. It's not your matter now. I am submitting. State- No, how many people were in on the date of Rajasthan, correct. judgment, before our judgment You will be defeated. and subsequent to our judgment? That's right. Three situations. Three stages. Three situations. There is one important point, what Mr. Devedi is saying, just 1 minute. On 7th December 2023, a question was asked in the Lok Sabha as to what is the vacancy position in the elementary teachers, of elementary teachers in the whole country. That question was answered, my lord, by the Minister of Education. Now we have the answer with us. As per that answer, as on 4th December 2023, there are 7,22,385 vacancies all over the country. And the chart is there These vacancies have to be filled up by. by our judgment. DLED. Yes. So there are over 7 lakh vacancies. That is no. There are over 7 lakh vacancies today as per the answer to this No question doubt of given that. on 4th December 2023. The Now, doubt how many last posts year. have been filled up earlier? That chart can be given in 1 or 2 days. Whether it would be, whether, first of all, any protection would be given to those already appointed, Correct. and if yes, should we make the Rajasthan High Court judgment the pegging date or our judgment? the Why Rajasthan should not be made? One simple thing. Just- Other high courts took the reverse view.
Himachal, after considering everything, Madhya took the Pradesh. reverse view. Bengal, after, Lord's Manoj, judgment. it can't go on like this, Manoj. We It's want not that to- only they have to be heard. We want to examine the problem today from these three perspectives. But if the first perspective is answered, my lord, that they should not be. Allow us, we are the applicants. We will take half an hour, allow us to finish and then they will respond. That's all. Your lordship, We know the argument. I All would suggest your lordship limit it to Madhya Pradesh who has the MA here. I would agree with Mr. Sankar. Madhya Pradesh. The others have all been decided. States. Otherwise, Whether- people will. The law has to be laid down for the whole country. There can be no The- limit Judgment. to interpretation of law. Lordships in, Judgment. On law is concerned, we have already laid No, out. but Yes. your lordship will Yes. equally say in the judgment. Let me tell your lordships. Law is very clear. No, I am saying Now, this is all on, Equity. equity. equity lordship. So therefore, मर गया बचा लो type. हाँ वही Lordship. but हर state में मरा है sir. So Lordships after your lordship's judgment. Even- Uttar even- Pradesh, even- they have, it's the same Even situation. prior to the final judgment, there was an order that everything will be subject to the final outcome of this writ petition. After our judgment, if somebody has been taken in. there's no question, he has to go. No, lordships, before your lordship's judgment. I'm talking before your lordship's judgment. Lords, one other fact which your lordships may kindly consider is that a 3-judge bench, my lord, followed your lordship's judgment of 11th of August in respect of Bihar, and my lords invalidated all the appointments. Kindly have a look at that order, my lord. So that question really doesn't come. Please hand over that order. Just have They were all the subsequent. Kindly see They that, my were lord. not people who were appointed. Lords, kindly see that, my lord. No appointment had taken. Please have a look at, my lord's page 15. Three-judge bench of this court. Yes, my lord. Lords, kindly have a look at page 15. So therefore, that question, my lords, may not be gone into. Kindly have a look at page 15. This court. Yes, my lord. Kindly have a look at page 15, my lords. It's not a very. Lords, kindly have a look at page No first appointments 17, had taken place. first 17, my lord. This is the order. Bench presided by Honorable Justice Bose, my lord, 3-judge bench. And the order is at page 15. And place it, my lord. The present petition has been instituted by the petitioner seeking invalidation of a notification issued by the NCTE in terms of so and so. Now, my lords, the notification details are given. Now, kindly see the second paragraph. In the judgment of this court, in so and so, the said notification has been directed by to be quashed. Then, my lords, page 16. All right, so the notification was, BA was qualified. Yes, my lord. Now, kindly see, my All lord. right, so this court relying upon. Now, kindly see page 16, my lord. Consequently, advertisement and other subsequent steps taken in pursuance thereof shall also stand invalidated. So, all the appointments have been invalidated. There Where was is the not a question single of taking? appointment. What is my friend saying? Not a single appointment had taken place. Pursuant to 2018. Pursuant Yes, to yes, 2018. correct. All the subsequent steps have been directed to be invalidated, my lord. Subsequent. Where is? Yes, 2018. 2018. Where is the question of carving out a separate category for MP? My lords, No MP makes. appointments had taken place. Lords, what your lordship said, that whatever, my lord, steps But were appointment- undertaken. Let us go step by Yes, step. my lord. Notification was there, there was no appointment. Yes, So here, there is, yes. nobody has. Lord, as far as No, not a single. Not a single appointment. Please don't make a wrong statement. Not a single appointment had been Lord, made. as far as appointments are concerned, All right, you make your point in half an hour, we give half an hour to them and then we'll close it. Take half an hour, All right. whatever you want to say. Would your lordship limit it to Madhya Pradesh? You tell him. Because otherwise, right Your now. lordships, there are other issues. applicants yes. from the entire country. I'm from Uttar Pradesh, your They are lordship. Mine speaking is- for entire country. We But also my speak lords, for the entire country. judgments, That's- my lords, what happens then to the Because judgment? by the next time you'll have more applications. Right now, 1,000 Can't be greater applicants. than the country. No, that is correct. Let them speak for the country, you also speak for the Lord, if country, you're- we'll also speak for the because country. if your lordships are looking at it on a countrywide basis, I have a difficulty. I had appeared for the original Yes, petition you'll before get the it. Rajasthan High Court. Yes, you'll file that. The B.Ed candidates were kept out of the merit list pursuant to the judgment of the Rajasthan High Court, which is what your lordships had upheld. You were also impleaded. If my lords are considering anything outside the state of MP, then kindly give us the opportunity to file the reply also. Lordships, identical Because situation. ultimately, having won twice over my lords before the High Court as well as before your lordship, then Right now, ultimately. we'll only after hearing both
both sides will. No, I agree, but MP what I'm saying is if your lordships are hearing at all the issue outside the Say MP, that when we do that, right, so we keep quiet. very well, I'm just indicating this. Instead of, before getting into all these We have got issues, to the information, reach that stage and you're already arguing like that. If you do that, do this. No, I'm only. before getting into all these controversies on the legal issues, as pointed out or as observed by the Assembly Court on the last occasion, the status, the position of vacancies, as well as the possibility of conducting the bridge course, that we will get an proper information within, at the earliest within 3-4 days or maximum within a week, we'll try to get an information so that we can put a quietus to the entire issue. We can safeguard the interest of both the parties. That will be more practical. Not practical. You will only give us figure. Figure, yes, that's right. Say there are, let us say you will tell us 5,000. Yeah. They may not be 5,000, they may be 6,000, they may be 10,000, they may be 4,000. Correct. What difference will it make? Ultimately, in the future, this one we can accommodate somebody. Numbers will be there. They'll We be will get some idea. some idea. Yes. Yes. That we have My got lords, 7,000, they have said. Let already. us, My lords, let us that- also give the figures of the appointed people. Yes. Only the state. The impact would be, Let it be My tomorrow, lords, Friday, we will may give the I- appointed figures also. May I give a Your bit of lordship may not be submission able to- there on the numbers? Like, My lords, the numbers, figures will not make a difference. That's what- Let me point out why I say so. Today, so far as the DLED are concerned, a large number of them who are today eligible to be appointed may not become eligible because of overage and other factors. That's it. They don't have anything available. that's right. I think what is running in the mind of the court. Give everything. Yeah, that's right. Sit at two on that. Fair enough, fair enough, fair enough. Lordships, one submission, if your lordships are deciding it for the entire country, could your lordships ask the states, because I'm from Uttar Pradesh, it is not represented, Cannot be different from. lordships, For different states. lordships. Because We they have only conducted, clarify our judgment. lordships, Clarify. yes, Whether yes. We feel there's nothing to clarify That is there. Whether something more to be added. because 3 high courts have taken the same position, nothing to clarify. Your lordship of 3 high courts. One submissions your We lordship are, for we all is are concerned. trying to bring a solution to a No, I problem. understand. That's And right. you people are trying to create a problem out of a solution. Not us, we are the respondents. Not every, There are Party to it. eight MAs have been dismissed. This is the 9th. let Just us, 1 minute, is there a bench? Monday at 2. Monday at Monday. 2. very good, very good, very good. But by Friday. I'll try to get it. I'll try. So far Bengal is concerned, Malad, we have the data. 7,000 and odd have been appointed. Concerned with the data. BEd candidates, We are Malad. concerned with the rights. Malad, the rights, if your lordship, Malad, kindly your lordship. So lordships, Can say it. Rights. we BEd have- candidates are ineligible. Right, we have already. If they are ineligible, You are here or there? I'm here. No, because we moved it first, DLED candidates. He's. DLED, Malad, I tell you, lordship, if they are ineligible, Friday at Monday. Monday. Monday and Shiksha Mitra also. Learning Council for the parties. My lords, at least the vacancy, whatever they want to say must be as per the advertisement. Hearing at present for the state of. Whatever the vacancies as per the date of the advertisement. Instruction as regards, It has to be. Previous direction. Vacancy position of. as regards. As regards the last vacancy order. position, in terms of our last order. Correct, correct. Kindly permit the Shiksha Mitra because they are also. Vacancy position as per the advertisements given by the individual states. That's right. And union territories. state, just a minute. The state of UP is not there. Lordship, may permit me, I'm for UP Shiksha Mitra Association, 150,000 people. There. Lordships and lordship, we have Those are B.Ed and duly qualified and well-trained teachers, my lord. Shiksha Mitra, what is Shiksha Mitra doing now? They are entitled for that. They are. Lordships, we were eligible. Unlawful. Now, because of B.Ed, we have been excluded. So this is the position. Yes. We were working. Shiksha It's a Mitra. terrible situation for us, your lordship. My lords, they acquired qualification appropriate to my lord's orders. Though Shiksha Mitra had to acquire qualification. petition may also be listed on that table, not those related to Shiksha Mitra. Lordship have issued notice in that. See, there is No, Because that is the, so many arguments need not be there. because
So It is far as separate. position of law is concerned, we have. Lordships, I agree. Whether to make some concession or not, that's what. Lordships, by only. We will. Lord, May I Lordship. be excused? Just a minute. Yes, we are excusing ourselves. One more data Lord, would be the- very relevant. This is the bill. The losses one. Intervention petitions may be allowed. One more data would be We hear on that date, Just whatever. hear everything. one more data will be more relevant. Milord, all- So many candidates, B.Ed candidates have been appointed, and for them, how many DL and DLED? All observed Shiksha Mitras, my lord, Nothing would be. Because are duly- they have been deprived of. My lords, there is an application pertaining to Bihar that may also be taken up on Monday. It was filed today morning, my lord. See, these individual applications. Yes, So it will have have no to be value. filed. My Lord Justice My lord, Tulia may pertaining to note Bihar, my lord. Let it that come the then. hearing this time was way more pleasant than it was last. Yeah. May pertaining- Lordship, Milord- maybe it's the women power here, that's because of that. My lords, You're not aware about what happened last time. May pertaining to Bihar also may be listed. Other states are also ma'am is the only one over there. See this. deeply obliged. Much obliged, my lord. Much obliged. Fine. No, I can't stand that. Keep it for I will take. मेरे फेमस फोन लेके भाई बहुत बढ़िया। देख लिया आप लोगों ने, ये सारे कारण, रुक के जाना, 1 मिनट बात को सुनते हुए जाना, ठीक है आप लोग। ये सारे कारण जो है भाई, देख लिया, कोई बीएड सेफ वेफ नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक तो सरकार ने आप लोगों से हाथ खींच लिया, तुषार मेहता नहीं आए, ठीक है। और दूसरी चीज भाई, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, भाई आप लोगों के पास पैसा तो है। आज की हियरिंग देख के ये लग रहा है कि एक तो सरकार ने हाथ खींच लिया, ठीक है, और दूसरी चीज भाई, एनसीटी ने नहीं बताया इन दोनों क्वेश्चन का जवाब कि ब्रिज कोर्स है या नहीं है। और तीसरी चीज जो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है भाई आप लोगों के पास बस पैसा ही है क्या, दिमाग नहीं है क्या आप लोगों के पास? भाई बीएड का सिलेक्टेड कैंडिडेट, आज मैं ये कहूंगा, इतना बेवकूफ है, तुमसे वकील की ब्रीफिंग नहीं होती ढंग से। तुम जो वकील कर रहे हो, पटवाले को कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा वकील है, लेकिन क्या तुम ढंग से नहीं बता सकते कि हाँ ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स की मार्कशीट है, प्रॉपर सारे प्रूफ हैं जो कि हमारे रिव्यू में लगे हुए हैं। यार तुम सिलेक्टेड कैंडिडेट, पता है बीएड को लेके डूबोगे सच में। इतने सारे प्रूफ ऑलरेडी हैं जो कि हमने अपने रिव्यू में लगाए हुए हैं, तुम्हारे पास वो नहीं है प्रूफ, ब्रिज कोर्स की मार्कशीट वगैरह नहीं है तुम्हारे पास। यार बिल्कुल हद ही कर दी भाई। सिलेक्टेड कैंडिडेट बस ये सोचता है मेरे पास पैसा है और मैं सब कुछ कर लूंगा। हालत देख रहे हो कैसे वकील कह रहे थे कि हमें 1-2 दिन और दे दो, हम बता देंगे कि कितना ब्रिज कोर्स है या नहीं है। यानी कि तुमसे इतने दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ जब से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, एक हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से ज्यादा ही हो गया, तब से मतलब तुमसे ढूंढे नहीं गए। और ब्रिज कोर्स की मार्कशीट इतनी घूमती है, वायरल होती है, मतलब यार बिल्कुल भाई हद है भाई, हद है। मंडे को होगी अब हेयरिंग, ठीक है। पता नहीं यार, बस आप लोग भी भाई, मतलब भाई सच में आप लोग ब्रीफ नहीं करते, सच में, मतलब अपने वकील को आप लोग ढंग से ब्रीफ नहीं करते हो कि डीएलएड कहाँ एलिजिबल है। यूपी की शिक्षा मित्र उनकी तरफ से आई, वो भी अपने आप को मतलब एलिजिबल बता रही थी। शिक्षा मित्र की क्या औकात है? शिक्षा मित्र की कुछ औकात है ना, प्रॉपर उसने कोर्स कर रखा है ना, मतलब यार वो भी अपने आप को एलिजिबल बता रही है, आप लोगों के मुंह पे चप्पल मार रही है। और ये कारण है कि बीएड एक नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। बीएड एक नहीं है ना, तो उसका ही कारण आप लोग भुगत रहे हो। पता नहीं भाई, आप सही में यहाँ सिलेक्टेड कैंडिडेट की वजह से ना, मतलब सही में आप लोग जाते तो हो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ढंग से ना तो आप अपने वकील को ब्रीफ करते हो चीजें, और ना उसको समझाते हो बीएड क्या है, अंतर क्या है, 11 अगस्त का जो जजमेंट है उसमें अंतर क्या है, कितने बच्चे क्या है। मतलब यार इसका मतलब आप लोग वर्क नहीं कर रहे भाई, पेपर वर्क बिल्कुल जीरो है आप लोगों का, पेपर वर्क बिल्कुल जीरो है भाई। सिलेक्टेड कैंडिडेट जितने भी ये लोग जा रहे हैं, यार बिल्कुल हद ही कर दी भाई आप लोग, बिल्कुल हद कर दी भाई। नहीं भाई, ये उम्मीद नहीं थी मुझे।
मुझे लगा यार सब कुछ डाटा लेके आओगे कि हाँ ब्रिज कोर्स की, चलो ये नहीं कह सकते कि हाँ ब्रिज कोर्स एनसीटी ब्रिज कोर्स की जो मार्कशीट वगैरह हैं, ठीक है, वो तो तुम कह सकते हो यार, पता नहीं क्या यार तुम लोग, बस मतलब बिल्कुल रिव्यू में भाई आप लोग सहयोग करो, ठीक है, और तुम लोग बस भाई क्या ही कहें, वो तो सरकार है तुम्हारी तरफ, वो तुषार मेहता की वजह से सरकार है इसलिए बस, वो तो खैर आए नहीं आज, लेकिन वही है कि सरकार है तुम्हारी तरफ इसलिए तुम बच गए, वरना तुम्हारी हियरिंग देख के ना लग नहीं रहा है कि तुम कुछ भी स्टैंड वहां लेने वाले थे। वो तो मंडे की हियरिंग मिल गई बस, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आता हूँ, ठीक है। और यार इन्हें आप लोग सारे ना टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। आप लोग मुझसे, हमारी टीम से आप लोग डायरेक्ट जुड़े रहेंगे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूं पहले तो, है ना, इन लोगों को मैं लिंक दे देता हूं ताकि ये लोग हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आप लोग सो जाते हो, फिर आपको सहयोग वयोग नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको भगवान शामिल करा ले, बीएड को पीआरटी में शामिल करा ले बस, है ना। आप लोग को सहयोग वयोग नहीं करना है। सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मैं आप लोगों को अभी लिंक दे दूं, ठीक है, ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें डायरेक्ट। ऐसे तो नहीं जीत पाओगे आप लोग अगर आपकी यही हरकत रही। यार आप लोग भी ना बस बिल्कुल यार हद ही करते हो भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट, भाई सच में भाई क्या ही कहूँ मैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट को तो मैं क्या ही कहूँ। नहीं भाई, सिलेक्टेड कैंडिडेट का तो हाल बुरा है भाई सच में। आप लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन सच में ना आपका पेपर वर्क है, ना आपने ये ढूंढा कि ब्रिज कोर्स कराने वाली है ना, मतलब कुछ भी नहीं ढूंढा आपने, जबकि सारे प्रूफ हमारे इसमें लगे हुए हैं, हमारी रिव्यू में हर एक प्रूफ लगा हुआ है, ब्रिज कोर्स की मार्कशीट तक लगी हुई है, कब तक ब्रिज कोर्स हुआ है वो सब लगा हुआ है। मीनाक्षी अरोड़ा कह रही थी नथिंग, कोई ब्रिज कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो झूठ बोलती है। लेकिन आप लोग क्या यार, कुछ नहीं भाई। मैं आपको ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है, आप लोग जुड़ जाना उसमें फटाफट से, ठीक है। कहाँ गया भाई तू भी यार, बिल्कुल यार सच में भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट भाई आप लोग बस सच में, वकील करने के तो पैसे हैं आप लोगों के पास, लेकिन वर्क आपका भाई जीरो। आपको सच में ऐसा लगता है कि बीएड के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, पता है सही में यार। मैं ये लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, ये लिंक मैं दे रहा हूँ, फटाफट इस पे क्लिक करो और फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ सभी, ठीक है, ताकि आप हमसे डायरेक्ट जुड़े रहें, ताकि आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े रहें। जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं, अगर पीआरटी में शामिल होना चाहते हैं भाई, बहुत ही नाजुक घड़ी, इंपॉर्टेंट घड़ी चल रही है बीएड के लिए, आप लोग शामिल होना चाहते हो, फटाफट से इस ग्रुप में जुड़ जाओ। ये लिंक मैंने दे दिया है, फटाफट से क्लिक करो, जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिएगा और ज्यादा परेशान नहीं होना है। अभी टेलीग्राम पे वीसी होगी तो वहां पे जुड़ना सभी के सभी, ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा अपने मम्मी पापा का, और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।